with the code of conduct, and then we'll be moving on with the event. If you didn't know, this event is also happening offline. So online we are joined by 43 people, but offline in LPU the event is happening live. So it's a hybrid event. Great means I'm on time. Yeah. Anyway, how is your Saturday going? How is your weekend been? Oh, and yes, if you can see in the chat, we are also live on YouTube. So if you want to watch it on YouTube, you can do that. Or if you want to share the link with your friends for them to join, you can share the link with them as well. It's going to be a very instructive event. So yeah, please hang on tight as we will begin shortly, and make sure that you mark your attendance. Bevy, you can proceed now, and you can hand over to Arijit for COC. Then Okay, we cool. can proceed. Yeah. Okay. All right. Now I call upon Arijit to read the code of conduct for the event, and thereafter we'll be moving on with the event. Thank you. Hello, am I audible? Good afternoon, everyone. So I'll now read the conduct. So first one is be nice, respectful, and constructive while interacting on the Bevy virtual or YouTube live chat social media. Is do not post anything if any adult content, rude or offensive statements. Advertise or promote anything. Fourth is do not spam. Fifth, harassment of any kind is not tolerated in this event, and if you fail to follow this code, of be blocked from chat. Sixth is report to GDSC at the lpu.co.in if you have find anything inappropriate here. I'll hand over to our speaker. So, hello everyone. First of all, I would like to welcome you all. So, I'm Ashwani Kumar, a SOC analyst, and part of GDG Jalandhar team. And today we will So I hope like you guys have gone through the code of conduct. So I will speak this quickly. Like be nice and respectful and constructive while they interactive. Do not post or share anything. Do not advertise or promote anything here. Do not spam, and harassment of any kind is not tolerated. So if you find anything inappropriate, just report to gdjalandhar@gmail.com. So before we start with a session of Firebase and web with the GDG, I would like to give you a short info about the GDG Jalandhar. So GDG Jalandhar is an initiative that has been taken by the Google developer in Punjab, and the purpose of creating this community is to learn, share, and create using the Google products. I hope like you have been familiar with that. Some of the famous Google products like Firebase that you are gonna learn today, and maybe TensorFlow, and more about the web. So it was founded in 2011, and it has influenced more than 80,000 right now, and
along with the, not only just students, the entrepreneur and IT professionals have even given their session on the various technologies, discussing about the various Google products, of course. So, taking this community forward, we have covered up the 10 years of journey, where more than 80,000 students, participants, and other entrepreneurs has been joined and learned from us. And we have till now we have been going through 300 plus meetups as well as events, and 500 speakers and influencers has come on this platform to share their knowledge. If you want to become a member of GD Jalandhar, you can just go through this URL and join us as your member. The next is WTM, that is Women Tech Maker Jalandhar, that has been founded in 2014, along with to bridge up the gap between the women and to make sure that we are even following up the women empowerment. So to get the women hands-on on the various technologies, basically on the Google products specifically. So this women tech makers has been helping many of the women around. So I hope, like, if you have any queries, you can just go on gdgjalandhar@gmail.com, and you can put any of the query there. So this was all about the welcome. So let's proceed further with the session of Firebase today. Thank you. So hi everyone, I hope I'm audible. Hi everyone sitting here. How are you guys? How are you all feeling? Had your lunch? Okay, so here I am, Varsha Jaiswal, working as a senior software engineer at EasyEat, and I'm currently leading the GDC Jalandhar community as an organizer and WTM ambassador. So we'll start this session now with a basic intro that what Firebase is and how we can use it in our web applications. Afterwards, Briz will take it over to run some code and to help you write some code and deploy an application using Firebase. So let's start. I can't see the chat section now, but I hope you all are excited and we are on the same page. Okay, so starting with the Firebase, it's actually an app platform which helps us build deploy a lot of things, and which actually it's a unified app platform where we can build applications related to Android, iOS, or anything, and it actually helps us to build the application faster, along with managing a lot of cases, a lot of things which a developer needs in the whole journey. So the mission of Firebase is actually to help the application developers and to get success by using the features provided over there and to take it forward. So as you can see, yes, we can create iOS application. We can use Firebase with iOS, Android, Web, Unity, or even C++ code. So if you are in learning C++ and you are thinking कि क्या करेंगे Firebase सीख के, we can do a lot of things using that as well. So yeah, Firebase actually focuses on a lot of things, but three main things are: one, that is building an application and building a better application. Second, the application which you have already built, it helps you to improve the application quality. And along with building the application and improving the quality, it helps you to grow and engage with the users. So like as you can see, there are 25 plus functionalities provided by Firebase, that is Firebase auth, hosting. It also provides you Crashlytics, which helps you to know when your app
crashing, what is the reason, and help you improve the same by like monitoring the performance and everything. It also helps you to analyze your application uses, that who is using and where the application is being used, what are the predictions, along with testing functionalities as well. You can also engage with your users using cloud messaging or in-app messaging by sending notifications or push notifications to your users. So let's start that how we can use Firebase for web, as this session is mostly focusing on the web, right? So Firebase for web has these features or these functionalities for all of us, that is authentication, cloud Firestore, real-time database, Firebase hosting, extensions, cloud messaging, and many more. So I'll just go through all of these quickly, and then Briz will help you out to code it and to build a better application today. So at the end of the day, we all will be building an application. There will be a link which we can share to our fellow friends who are attending, and we can check out that what we have built. So first is Firebase authentication. It's actually a platform or a functionality which helps you to build a authentication platform for your web application. We all know that security is important, and using Firebase authentication, you really don't need to write that signing, sign up, login, and everything code. You just need to use Firebase authentication feature. It's so flexible. It is really fast to implement, and you can easily signing using any platform. It's already integrated with a lot of platforms like Facebook, Twitter, GitHub, Google, and many more. And the best thing is you can create your own custom authentication platform for your own platform, and you can have this feature implemented. And you really need not to think कि अभी security का क्या करना है, what if there will be any security breach or anything, right? Next is Cloud Firestore. So there are three types of storage functionality which Firebase gives us. First is Cloud Firestore, where we can store and sync our application data at global level. It actually helps you to have the data stored in NoSQL database, which is truly serverless, and you can access it throughout anywhere in the world. Now next comes Firebase real-time database. So while cloud database was there, how Firebase real-time database is important for us, because it actually helps you to sync using JSON data, and that to real time. It also provides you offline support, and you can see that what from where the user is joining, and a lot of features that okay, this is how I can collaborate with my users using Firebase real-time database. Third in the line is cloud storage by Firebase. So now we know that user is just not going to save the name, email address, and phone number in a JSON format. There will be photos, videos, and a lot more media included in your application. So in case if you are using media, like storing media from a user in your application, we need to use the feature of cloud storage, where we can store these type of medias in our system. Next is okay, so now we have authenticated our application using authentication. Whatever data we are taking from user, we have stored it using the storage media functionalities provided by Firebase. The application is half built, but we need to host it somewhere. So Firebase hosting gives you a fast and secure web hosting, where you can just deploy your whole code with a command from your CLI without doing anything, any extra things, and it's accessible from anywhere. It helps you to deliver your content faster to the users out there. Next is cloud functions for Firebase. So although we know that okay, most of the backend thing is handled by Firebase when you are developing your application, but there can be a piece of code, some complex programming which you are required to run on your system. So what you can do, you can use cloud functions to write your complex
computations, and you can use these functions to create backend code without managing your servers, that how the load and everything is getting how you have to take care of all those things. Next in the line is Firebase extensions. I hope we have used a lot of Google extensions, Google Chrome extensions already. Be it like CSS color picker or screen recorder or screenshot or a lot of things, right? So we can also create our extensions using Firebase, and we can there are already provide you can create there are already extensions available for like resize image, be it translate the text, and many more. I think last in the line is cloud messaging. We have developed our application, we have connected the application, deployed it, everything is running. We don't need server to scale up, and all the things are happening. Now we need to engage with our users as well. So how we can do so? We can use FCM, that is Firebase Cloud Messaging, where we can send the notification to our users who are accessing our application across platform, and that's too for free. You just need to send you can send messages to any device. You can customize that what your notification is all about, what is the content you want to share with your users. And for this, the best thing is we really don't need to write a line of codes to implement this. We can do this from consoles, right? So in short, today I just talked about, I was a bit fast, but we'll take time to code. So it was a quick go through that. Okay, we talked about how we can authenticate our application, how we can store different type of data using these different type of storage features provided by Firebase, that is Cloud Firestore, Firebase real-time database, or cloud storage for Firebase. How we can host our application on our on Firebase, and what if we have some complex computation to do, we can use cloud functions. And then Firebase extensions to just enhance your user reach, and Firebase cloud messaging to engage with your users by sending notifications and all. So this is the summary, and now you might be thinking that okay, I can build anything. We have done. We are going. Everything is there in Firebase, and if I'll just learn it, or if I'll just start implementing it, everything is possible. But the question is, how is it possible? So for that, we have GD for Firebase. I'll take leave and I'll give the stage to him, and he'll help you that how we can implement all these things and build a better application. Thank you. Yeah. So first of all, thank you so much everyone for having me. And my name is Vrijraj, and I'm a Google developer expert for web technology and Firebase, and also I'm a tech lead for AppProp. So like today we are going to build a simple web applications with the help of Firebase. Like you can create a resume, like you can create a portfolio with the help of Firebase, and you can deploy your portfolio on Firebase, and there will be a specific URL, and you can share your URL in your portfolio. So let's get started. So before moving to the like code part, first we will mainly work on the web part, where you need mainly you have to work on HTML, CSS, and the JavaScript. Like you can write your web pages with the help of HTML. So first I'll give you the overview. Like if you want to know more about Firebase, there is a website name is firebase.google.com. This is the main website. Here you can create the projects. So let's say like with the, as you know, like Varsha mentioned, like you can build anything with the help of Firebase. Let's say if you want to build mobile applications, you can use Firebase, or if you want to build, let's say, cloud type of applications, you can use the concept of Firebase. So you can do anything. So here I'm going to talk about, like, mainly we'll focus on the web platform. So here you can go to the console, like in the web section. Here we have a section of console. So just click on the console part, and then you can directly navigate it to the console. And then here we have a plus symbol, like you can create a projects. So I'll click on the add project button, and then here you can select the project name. So let's say I'm creating a portfolio. So let's say my portfolio name is Vrijraj-web app. Okay,
So this is my portfolio. This is my project name. And then I'll click on the continue button. So this is how I'm starting this Firebase project. So next step is, this next part is Google Analytics. We use Google Analytics for the tracking the user, like how many users are visiting your website. You can track with the help of Google Analytics. So right now we are not using Google Analytics. So you can just disable the part and then click on the create project. Okay, is it easy? Yeah. So this is the 3 steps. Like first you need to go to the Firebase website, and then you can go navigate to the console, and then you can create a project, and then you can mention the project and just click on the next, and then create a project. So this is your Firebase console dashboard. So this is the Firebase dashboard. And as Varsha is mentioned, like with the help of Firebase, you can build large scale or scalable web applications. And inside build, we have a n number of services. Let's say first services name is authentications. So these all are the authentications. Let's say you want to create a website where you can navigate or you can authenticate the user. You can use authentication as a service. The next one part is app check. Let's say if you are working on a mobile application development, you can check the app quality with the help of app check. And also you can use Firebase as a database. So here in the Firebase, we have a 2 type of database. One is cloud file store, and the second one is real-time database. And the next service is called as storage, where you can upload your file, let's say JPEG file, PNG file, PDF file in the storage section. And there are n number of services you can use inside the Firebase in the build part. Let's say hosting, you can host your web applications with the help of Firebase. So first I'll tell you, first we're going to deploy our simple web applications on Firebase. So I'll just navigating into the hosting services. So this is my hosting service. Okay. So I'll click on the get started button. Okay, so this is the get started button, and here we have an instruction. To host your website, you just need to install Node.js. So you can go, just jump to the Google, and then you can directly search Node.js. And this is a website for the Node.js, and you can directly install this Node.js LTS version. So this is the first thing you have to need before hosting your website. First, you need to download Node.js, and then after installing the Node.js in your system, then you can just jump to the CLI, and then you can just put this command and then install, and that's it. So these 2 steps is necessary for hosting your website. So I'm installing my CLI. Is it easy? Okay, till the time, you can click on the next button, and then there is an instruction for login and initiating the projects. So once you install the Node.js and once you install the Firebase CLI with that particular command, like I have already installed Firebase CLI, now I can copy this command, I can put this command on a terminal, and that's it. Firebase login means you can authenticate the user, like you can authenticate the CLI with your Google account. So I have already logged in with my email ID, name is vrijraj2396@gmail.com. If you haven't logged in with your email ID, you just need to click on the yes button, and then you can navigate to the website, and then you can authorize the CLI. Okay, all good. Now I'll create a simple HTML web application. So first we can create a directory. You can create a folder in your Windows applications. So I'll create a new folder, name is portfolio. So this is my directory, and I can just open this directory with the help of VS Code editor, like in the terminal with the help of code dot. Okay, so my VS Code is ready. So here's my directory. I hope you all are able to see the screen. Okay, so first we need to initialize the Firebase applications. So how we can initialize the Firebase application? You can just go to the terminal inside in your VS Code editor and click on the new terminal. And then you need to type few commands. First command is Firebase init for initializing your Firebase project. So let's say I'm
click on the Firebase init, and then there is an option for which type of services you want to use inside the Firebase. So there is a services name is real-time database. You can use cloud firestore. You can use function. You can use hosting. So basically, we are using hosting because I want to deploy my website. So I click on the hosting part, and again there is a two options for the hosting. First one is with the GitHub CI/CD tools. Means once you like uploaded your HTML, CSS, JavaScript code into the GitHub part, it will automatically sync and it will automatically deploy. We are not using CI/CD part. You just need to like you can select the first services like config file for Firebase hosting and optionally set up for the GitHub. Okay, I just need to select the service with the help of spacebar. So I'll click on the spacebar to select the service and then click on the enter. And then you can select for which project you want to use these configurations. So there is an option for use an existing project. Another option is for, let's say you can create a separate project. So I have already created a project. So here is my project name is, I click on the next button and then go to the console. So my project name is Vrijraj web app. So I'll just click on the use an existing applications. And then here we have a list of applications. So let's say my application's name is Vrijraj web app. So I'll search, I'll just go to the Vrijraj web app. Yeah, so this one, Vrijraj web app. So I'll select this project and yeah. So now we need to select the folder, like on which folder you can write your HTML, you can develop your HTML file, you can build your CSS logic, you can write your HTML logic. So you can create a directory. So if you do not want to create a directory, it will automatically create a directory name is public. Okay. And then if you want to create a single page applications, then you can select the yes, or if you're not working on a single page applications, then you can type no and then enter. And if you want to use the concept of CI/CD with the help of GitHub, you can use yes, otherwise you can use no. Okay, so now my Firebase has created a few files. First directory name is public, and inside public directory we have a HTML file like 404.html. Second one is index.html, and outside this directory we have a file name is Firebase src, get ignored, and firebase.json file. So this is a very simple step. The first step we have created a project on Firebase website, and then we have installed Node.js, and then we have installed the Firebase CLI, and then we have authenticated the CLI, and then we just type the command Firebase init, and then we follow the instructions. And then we have this directory. So now let's say this is my simple web applications. I can serve this web applications, or I can test this web application in my system with the help of simple command Firebase serve. So you just need to type Firebase serve. Yeah. So it will serve your, like there will be a generating URL, localhost colon 5005. You can open this URL. Just a minute. Yeah. So I'll open localhost 5005. This is a URL and this is my applications, which is working on as of now in my local machine. And this is the code. So here the code is coming from this index.html file. So what I can do, I can remove this entire code and I will save and then I'll reload this page. So nothing is there because this code is working on this side. So here is the HTML file. You can create HTML tags. So you can write HTML file logic like we have written HTML file logic. So inside body, you can create a heading text, you can create a paragraph text. So let's say I want to create a heading text and here I can mention the Vrijraj as a name. And then you can save and then just reload the page and this is text is coming. Okay. So as of now, I'm writing or I'm developing this HTML logic with the help of local machine using Firebase. So you can write a paragraph tag and you can use lot of Lipsum content and then you can save and then you can test. Okay, so this is a simple logic. I'm just working on HTML5 and if you want to write some CSS logic, you can use the concept of inline CSS.
Here we have a style tag, and then you can change the color. Let's say color is equal to red. So means I'm changing the paragraph heading tag name is to color is red. So color is red. Okay. So this is how we can create a website. And now I wanted to deploy this website so that it can be accessible from any kind of user or over the internet. So for deploying your website, you just need to like you can terminate this command, and then you need to type this command Firebase deploy. And this with a single line of command, you can deploy your website, and that's it. So my website is going to be deployed. Okay, so my website is deployed. You can check out the URL. This is a URL by default URL. You can open this URL, and this is a shareable URL. You can share the URL, and you can connect this URL with your custom domain. You can purchase the domain on GoDaddy, BigRock, any website, and you can connect with that. Okay, so now let's say this is a public hosted URL. I can share this URL on a group. And then let's say I wanted to add something. Let's say we can create a table. So I can create a table with the help of table tags. So here in the paragraph tag, I'll create a table tag. Inside table, we can have rows. So we can create a row with the help of tr tag. And inside tr, we can create a column with the help of td. So let's say I can mention my the experience. So let's say my experience name is as a tech lead. At the company name is, you can mention ED Acrop. Okay, so this is my table. Here we have a one row. Inside one row, I have a two column. And you can define the border with the border property one. And you can test this entire website. You just need to run the command Firebase serve. And then there will be a localhost URL. And you can open this URL, and then you can test. So this is now the table is working, tech lead at Actrop. And also you can mention another URL. Let's say you can create another row. So we can create a row. Here in the row, we can create a column. So first column name is Google Developer Expert. And then another column we can mention to tech, let's say Firebase and web. So I'll just reload the page, and yeah, so my content is visible. It's totally up to you how you can design the website with the help of CSS, or you can use any library. Let's say you can use the concept of Bootstrap, where we have predefined contents. So you just need to copy paste the component, and then you can put the component, HTML tags, and you can do that. So now let's say I wanted to deploy this in website. Again, we need to run this command Firebase deploy. So you can deploy the website. I can open the new terminal, and then we'll run the command Firebase deploy. And that's it. Okay, my website is deployed. You can just reload the page, and website is updated. So every time you are working on a HTML code, you just need to update the code, and then you can check the code in with the help of Firebase serve in your local machine, and then you can deploy this website with the help of Firebase deploy as a command. And one of the best thing about Firebase hosting means you can revert your website. Let's say this is my latest version, right? This is my latest version of website. Here we have a table. So I can just go to the Firebase dashboard in the hosting part, and I can reload the page. And here we have lots of version. So here we have a version name is the first version I have released of this website is at 3:37 p.m. And the next version I have released around 3:45 p.m. where I have mentioned the table tag. So you can revert back, like you can restore the website. You can roll back the website. So I'll click on the rollback, and then website is rolled back with previous version. So I'll just reload the page of my hosting website, and yeah, roll back. So कभी कभी होता है कि कभी कभी होता है ना कि लाइव कोड चले जाते हैं और कभी गलती हो जाती है तो पीछे जाते हैं. तो पीछे जाना इजी होता है क्लाउड बेस्ड वेबसाइट में. अब जैसे कि मैंने पीछे चला गया, मेरे को लेटेस्ट वेबसाइट पे जाना है. अगेन क्या करना है, फायरबेस होस्टिंग में
एंड मेरी लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट कौन सी थी, 3:45 PM पे लेटेस्ट थी. सो मेरी 3:45 PM पे थी, इस पर मैंने क्लिक करा एंड रोल बैक, एंड या रोल बैक एंड जस्ट प्लीज रीलोड द पेज, टेबल इज विजिबल. सो खेल खेल सकते हो आप. So you can deploy the website, you can, let's say, कुछ error आ गई, so roll back कर दो, previous version पे चले जाओ. So ये पूरी होती है Firebase hosting, ये पूरी free है. You will get the free SSL certificate and there is no charges for the website. Just you need to connect your domain. Let's say I'm like मेरी खुद की website है vrijraj.xyz, where I have built this entire website with the help of Vue.js, and yeah, it's working on a Firebase, as well as I'm using Firebase as a database, and I'm using the concept of push notifications with the help of Firebase push messaging. So पहला step हमने complete करा, where we have used the concept of Firebase hosting. We have created a HTML page. We have tested this HTML page with the help of Firebase CLI. The command we have used Firebase serve, and we can deploy this website with the help of Firebase deploy as a command. Now I'm going to talk about the database part. Let's say we have created a website where user can input something and then we can store the data in our database. So inside Firebase, we have a database name, service name is Cloud Firestore. So you can just go to the Firebase database, Firestore database. It's a NoSQL database. So I hope you are in third year, final year, first year, but database is a technology where you can store the data so that it can be accessible in 4 easy way. You can apply CRUD operations, like you can create, you can read, you can update, and you can delete the data in easy way, so that we are using the concept of database. So in the market, we have a two type of database, which was structured and unstructured database. So structured database means where we have a proper structure, schema. It's called as schema or relational database. If I talk about unstructured database, means जिसका कोई schema नहीं होता, data कुछ भी आ सकता है. Like कभी भी like एक student का data आ जाएगा, कभी एक images का data आ जाएगा, video का data आ जाएगा. So unstructured database is इसका कोई proper structure exam कुछ होगा ही नहीं. Like एक मैं example देता हूँ, Facebook. So Facebook में क्या कर सकते हो? You can put as a text, post, images भी डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो, गिफ्ट भी डाल सकते हो. तो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है क्या? कुछ भी डाल सकते हो, राइट? तो फेसबुक होता है ना, डेटा को स्टोर करता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के फॉर्मेट में स्टोर करता है. और जो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होते हैं, जिसमें अपन है ना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, वी आर स्टोरिंग द डेटा इन टर्म्स ऑफ स्कीमा, we are using the concept of tables, जिसमें होता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ आपके कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, MySQL क्वेरीज चलती है. सो ये सारे आपके डेटाबेस होते हैं, जो होते हैं आपके स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस. बट वंस यू आर जम्प इनटू द कॉर्पोरेट पार्ट, मेनली वी हैव टू वर्क ऑन द NoSQL डेटाबेस, द अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, वेयर डेटा कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी तरीके से डेटा आ सकता है. यू जस्ट नीड टू स्टोर द डेटा इन लाइक एनी फॉर्मेट. सो हियर इन द unstructured database, there are multiple database in the corporate. MongoDB, suna hai? So MongoDB is an example of NoSQL database. Similarly, HBase, Facebook use लेती है. Cassandra, Netflix में movies होती है. So they are storing the data. Hotstar में भी NoSQL database चलता है, जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए देते हैं. So वहाँ है ना, लाइक कोई फॉर्मेट नहीं है, कभी भी मूवीज स्टोर हो सकती है, क्योंकि एक टीवी सीरीज के मल्टीपल एपिसोड्स हो सकते हैं, या मे बी एक टीवी सीरीज में एक एपिसोड हो सकता है. तो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए अपन लेते हैं NoSQL डेटाबेस. ओके, सो Cloud Firestore is, again, this is a NoSQL database, and you can store the data in terms of collections and records. मार्कर है क्या? Okay, no issue. Can I have a notebook? Unstructured database or NoSQL database is an example of this notebook, because this notebook is right. You can store any information, access that we कोई proper structure नहीं होता है, कुछ भी दूसरे पेज में कुछ भी होता है. This is the example of unstructured database. NoSQL database. Same with MongoDB, same with Cloud Firestore, same with Cassandra, same with HBase. But you can use everything in database.
एक notebook है कि basically क्या होता है आपके subject को develop किया, right? So basically you are creating a notebook for the let's say subject C++, right? So this is a notebook for the C++. ये first page पे आपने index लिख दिया, second page पे आपने C++ का introduction लिख दिया, second page पे third page पे कुछ भी लिख दिया. So here we have notebook. So notebook is a इसको technical language में बोला जाता है collections. In the NoSQL database. So we can in a database, NoSQL database, we can have a kind of collections. So this collection may be related to users, this collection may be related to objects. Let's say आप notebook create करते हैं. So users की information on this or this collection में store करते हैं users notebook की information store करते हैं, you can store the information in this particular collection. Okay. Easy. Inside collections we can have a multiple documents. Document means pages. This is a NoSQL database. So it's अपने collection state करा, my collection name is C++. Inside I can create documents. Here is my documents. This is document 1. This document take unique ID. Okay. Inside this document you can write any data. Means you can create any fields. Easy. This is a NoSQL database. Easy है, कोई structure नहीं है, बस लिखना है data. You can read the data. Let's say maybe let's say आप fields में read करते हो. First you can go to the index. Index में check करते हो कि मेरे को C++ का concept पढ़ना है. Concept classes, I guess. The classes का index ID देखो, page number से check करते हो, page number से लिख जाता है. The same process we are running on NoSQL database because we have an index. You just need to go to the index, remember you are searching for the documents, and then you can find the documents and you can read the data from that particular documents. Okay. Simple. मैं टेबल की बात नहीं करूँगा. So let's say we create a multiple documents. Sorry. So this is my like NoSQL database. So I'll click on the create database. So here we have two options. So first option is production mode and second one is testing mode. So right now we are So right now we are developing these applications. So for developing this application, we need production mode or testing mode. Testing mode. क्योंकि सीधा live थोड़ी नहीं कर रहे हैं, पहले develop कर रहे हैं. So first we can select testing mode and then you can click on the next button. I'll click on the next button, and then you can select the storage. कि let's say कि मेरे को ये data है, database allocate कर रहा हूँ, उसको मेरे को कहाँ store करना है? Because Firebase is working on a GCP. So GCP, we have a data centers, and GCP has a multiple data centers on global. So कहीं भी एक मुंबई में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, maybe रशिया में हो सकता है, कहीं सिंगापुर में हो सकता है. So you can select any regions. So I have allocated by default region, and then we can click on the enable button. So मेरा एक database allocate हो गया. Okay. Okay, so as I mentioned, like look, Cloud Firestore is a NoSQL database. So in NoSQL database, we can have a multiple collections, means the notebooks. And inside collections, we can create a multiple documents. And each documents, we can create a multiple data. So here we have a collections, like you can create a collections. Let's say I'm creating a collections name is users. जहाँ मैं users की information रख रहा हूँ. Okay. So click on next button. And inside collections, we can create a documents. So let's say we may have students directory. So this is the register for the students. So my collections name is users. Inside we have information of user one. Right? This is the user one information. So first we need to provide a unique ID for this particular document. So here we have document ID, which will be unique ID. You can generate an auto ID. It's totally up to you, or you can define ID. Let's say 1. Totally आप पे depend करेगा. So मैंने auto ID डाल दी. And inside this document, you can provide any data. Like you can mention name is equal to XYZ, email ID this file. So you can define the fields. So let's say I'm defining a field name and student S1.
You can define multiple fields. It's totally up to you. It's a NoSQL database. So let's say I'm storing student age, and student age is, let's say, 23, and then you can click on the save button. And here we have a collections name is user. Inside collections, we have a document, first document, and inside the document, we have a data, age, and name. Okay, easy. So this is all. This is a simple interface of Cloud Firestore. If you are using MongoDB, this will be the same interface. First, you need to create a collections. Inside collections, you can define the documents, and inside document, you can create a fields. Okay, so let's say in a users collections, I wanted to create another document for the user too. So I'll click on the add document, and then I can auto generate the ID, and you can define the name, and this one is for the student too, and then we can define the field. So let's say the age is 35, बहुत ज़्यादा बड़ा है. Okay, so we have two documents inside the user collections, and then here we have a unique ID of each collections, and then we can the document, and then we can find the data inside the document. Okay, easy, right? So Firebase बहुत easy है. You just need to run the set of functions. वो functions आपको run करने हैं, and then you can get the data in with the help of web. Okay, so अभी मैंने आपको UI interface बताया कि like आप Cloud Firestore को कैसे access कर पा रहे हो. Like you can, if you want to delete some data, or if you want to update some data, let's say I wanted to change the age of 35 to, let's say, 21. So I'll just replace and then click on the update, and data is updated. Easy. जैसे SQL में आपकी tables होती है, so you need to run the code. Update, कुछ होता होगा, गलती से पढ़ लिया होगा. Update, क्या पढ़ा था गलती से? Right, गलती से पढ़ लिया होगा वो. तो same the same, but yeah, इधर वो गलती नहीं करनी, because you don't need to remember the commands or the SQL queries. You just need to go to the user interface, and then you can find the ID or the documents, and then you can find the fields, and you just go to the fields, and you can delete, you can update. It's totally up to you. Simple से commands है, और ये run हो जाएगा आपका. Okay, so now अब मेरे को क्या करना है, ये एक वेब एप्लीकेशन बनानी है. उस वेब एप्लीकेशन में मैं क्या करूँगा, एक इनपुट फील्ड डालूंगा. उस इनपुट फील्ड में XYZ कुछ टाइप करूंगा, एक बटन क्लिक करूंगा ऐड का. जब बटन पे क्लिक करूंगा तो वो डेटा होता है अपने डेटाबेस में, मेरे को स्टोर करना है. सिंपल सी एप्लीकेशन है. आपने सुना होगा सराहा, गलती से सुन लिया होगा, कभी आता था कि like anonymous feedback, like you can create a unique URL for the user, and then you can share the URL with your friend, and then your friend will share the anonymous feedback कि like तू कैसा है, वो कैसे है, ये वगैरह वगैरह. So आप है ना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, share your thoughts. It's all about anonymous feedback for yourself, and yeah, you can get the data, and then you can find the data in the database part, and so एक सैम्पल से एप्लीकेशन बन जाएगी आपके Firebase से, और आप रिज्यूमे में लिखोगे तो रिक्रूटर बोलेंगे वाह. Okay, so let's start it. So अभी तक अपन ने क्या करा है, Firebase hosting यूज ली है. So we have used the concept of Firebase hosting. Node.js इंस्टॉल करा. Node.js इंस्टॉल करने के बाद Firebase की CLI इंस्टॉल करी. उसके बाद Firebase की जो init कमांड रन करके Firebase को कनेक्ट करा था. ओके, ईजी था. सो अभी मैंने index.html फाइल में गया, यहाँ ये अपना वही बाय डिफ़ॉल्ट कोड है. सो अब मेरे को एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है. तो इनपुट फील्ड मैं क्रिएट कर सकता हूँ कैसे, HTML में इनपुट फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, input tag, right? So here we have an input tag. So I'll type input type is equal to text, which means I'm collecting as a text. ठीक है, और एक बटन मैं क्रिएट कर लेता हूँ. So let's say I'm creating a button. So button tag. Here we can write the button name. Let's say add data. Easy. तब मेरे को टेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, लोकल में चलाने के लिए I'll run the command firebase serve. So firebase serve already run कर रही है मेरी कमांड. मेरे को यहाँ जाना है और जस्ट पेज रीलोड करना है, तो ये मेरे को दिख रहा है, विजिबल है. इजी. ओके, सो एक BR टैग लगा लेते हैं. BR से थोड़ा लाइन ब्रेक हो जाएगा और एक स्पेस आ जाएगा. सो हियर वी हैव अ स्पेस. ओके, सो फर्स्ट स्टेप, इट्स ऑल अबाउट द एल्गोरिथम. कि अब मेरे को करना क्या है, एल्गोरिथम करना है. सो पहला स्टेप क्या है कि लाइक आपने इनपुट फील्ड बना दी, देन यू हैव क्रिएटेड अ बटन. Now user will input some data in the input field, and then the next step is you need to collect the data from the input field. The third step, जो data है उसको आपको कहाँ स्टोर करना है,
database में. So this is the algorithm. So every problem you can solve with the help of steps. So you can define the algorithms, and so my first step is completed. We have defined the UI. Like मैंने एक UI बना दिया जिसमें इनपुट फील्ड है. सेकंड मैंने बटन बना दिया, तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. सेकंड स्टेप है मैंने कि जैसे मैंने ये लिखा हेलो, और हेलो क्लिक करने के बाद वो हेलो इस बटन पे क्लिक कर रहा, तो मेरे को ये हेलो रिसीव होना चाहिए. इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करना है. सो डू यू नो एनी आइडिया अबाउट जावास्क्रिप्ट? कैसे करते हैं इनपुट फील्ड से? Right. So for collecting a data from the input field, first you need to define the ID in the input field. So here we have a ID. So ID मैंने डाल दी. Let's say my ID is message. Okay. And then similarly in the button you need to define the ID. So my button ID is btn submit or as. Okay. This is a unique ID. Easy. Okay. So now it's all about JavaScript. With the help of JavaScript, you can make interactive web pages. Let's say JavaScript का एक बटन है, बटन का क्लिक करा तो आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, रेड, ग्रीन, येलो. यूएमएस में देखा होगा थीम चेंज हो जाती है. तो वो सारा काम आपका जावास्क्रिप्ट से होता है. जावास्क्रिप्ट सीख ली तो दुनिया में कोई भी काम बचेगा नहीं, आई गेस. मतलब you can build anything with the help of JavaScript. You can create a mobile applications, you can create a CLI kind of applications, you can create a gaming applications, you can build desktop applications, you can build Mac OS applications, you can build Linux based applications, IoT based applications. You can do anything with the help of JavaScript. So for creating a JavaScript, or JavaScript आपने पढ़ी नहीं होगी, but yeah, if you want to write a logic in the JavaScript, so you need to create a script tag, and inside script tag you can write the command for the JavaScript. Okay. So in JavaScript we can create a variable with the help of let keyword. गलती से सुना होगा C++ में we have to use integer int keyword for creating a integer, right? So in JavaScript, whenever we want to create a variable, we just need to use let as a keyword, and then we can define the variable name. So let's say my variable name is name, and then you can pass the value in the string. Let's say my value is Vrijraj. Okay, so this is variable is defined, and then you can test, just reload the page, but name is not visible, where you can see the name variable. So what you have to do, you just need to go to the inspect element of your Chrome browser, and then here we have a section for the console. Okay, this is a console window. Here you can access the variable. So let's say here I'll just type name and then enter, and the name is visible. Okay, you don't need to type the name again and again. What you can do here, you can write console.log. Console.log, here we can pass the name. Save and then reload, and name is visible. Easy. So C++ में कभी गलती से पढ़ लिया होगा x is equal to a, नहीं, x is equal to 3, y is equal to 4, z is equal to a plus b, x plus y, कुछ करा होगा. So similarly, we can create a variable. Let's say a is equal to 4, let b is equal to 5. We can create another variable, c is equal to a plus b, right? So we can create a performance like arithmetic operations, and then we can print. So how we can print the data? So here you just need to use console.log. Console.log. Here we can print the value of c. C means the value of c is a plus b, where a is 4 and b is equal to 5. 4 plus 5 is equal to 8, right? Okay, it's a 9. So ये पूरी JavaScript है. It's all about the variables. It's all about the functions. It's all about the basic programming fundamentals. जो आपके if else और while, for loops, ये सारे आपके चलते हैं. You can create an array. JavaScript और unique क्यों है? Market में most popular language क्यों है? Because whenever you are learning C++ or the C language, there is a definitions of array. Array is data linear और कुछ similar type of data type. Like C++ में क्या होता है कि array create करते हैं तो आपको integer का array बनाना पड़ेगा. Integer के अंदर string नहीं डाल सकते, integer के अंदर character नहीं डाल सकते. But in JavaScript you can do anything.
means you can create a kachra of JavaScript or the kachra of array. So like you can create an array. So here we have an array name is this one, and you need to use square bracket, and inside you can pass the value. So let's say first index में मैंने value pass करी 23, second index में मैंने value pass कर दी let's say name मैंने डाल दिया GDSC, थर्ड इंडेक्स में मैंने डाल दिया ट्रू बूलियन होते हैं ना ट्रू फॉल्स, so ये मैंने कर दिया. So we can create a कचरा type of array. like ये जावास्क्रिप्ट है ना आपको इंडिपेंडेंसी देती है कि like you can do anything. like limitations होती है C++ में या C लैंग्वेज में या कोई एक लैंग्वेज में जाओगे जहाँ डेटा टाइप्स आ जाते हैं. So यहाँ डेटा टाइप्स बेसिक पे ना limitations नहीं है, so you can do anything. That's why we are using JavaScript for creating a cross-platform applications. Let's say we are working on a mobile applications, use low JavaScript create करो. You can build games with the help of JavaScript. You can build desktop applications with the help of JavaScript क्योंकि यहाँ limitations नहीं है. So you can print the array. So here we just need to use console.log, and then here you can pass the array name, and then save, and then reload the page. Here we have an array. So इस array में आपको देखोगे तो first index पे 23, second index पे GDSC, and third index पे true false. Easy. JavaScript सीख लिए तो job ले लोगे, बहुत अच्छी. Okay, so like we know about like अभी तक अपन को पता चल गया है कि variables कैसे create कर सकते हैं, and we know about how we can store the data in a variables. We just need to use equal operator, and then we can pass the value. So what we can do here, we have a message. So मैं एक message का एक variable create कर लेता हूँ, let message data, and then equal to खाली, क्योंकि अभी by default कुछ नहीं होगा value, right? और ये सारा मैंने हटा दिया. Easy. ये मैसेज होता है मेरे को रिसीव करना है, ये वाला मैसेज है, ये इनपुट में जो आप टाइप करोगे ये मेरे को रिसीव करना है इसमें, राइट? सो ये रिसीव कैसे करोगे, एनी आइडिया? राइट, so you can write document dot get element by id, and then here you can pass the id. My id is message id. ये जावास्क्रिप्ट का थोड़ी सी फंक्शनलिटी होती है. Document means I'm collecting or accessing a HTML DOM element, and inside HTML DOM element I'm accessing a HTML DOM whose ID is message. तो मुझको है ना ये मिल जाएगा. अब इस पे मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखूंगा डॉट वैल्यू, दैट्स इट. सेव करा, और इसको मैंने क्या करा, रीलोड कर, यहाँ लिखते हैं कंसोल लॉग मैसेज डेटा. इजी. रीलोड. अब मैंने क्या करा, कुछ टाइप करा, टाइप करने के बाद मैंने ये क्या करा, मैसेज को मैंने प्रिंट कराया, मैसेज डेटा. सो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है खाली, क्योंकि मैंने ये फंक्शंस, ये लॉजिक है, इस लॉजिक को मैंने रन ही नहीं करा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये खाली रहेगा वैल्यू, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइप ही नहीं करा है, राइट? सो मेरे को ये क्या करना पड़ेगा कि व्हेन वी टाइप समथिंग ऑन अ इनपुट बॉक्स, एंड देन वी नीड टू क्लिक ऑन द बटन, एंड वंस वी क्लिक ऑन द बटन देन वी नीड टू रिसीव द वैल्यू फ्रॉम इनपुट फील्ड. सो मेरे को पहले है ना लॉजिक लिखना पड़ेगा बटन का, कि लाइक मैं जब बटन पे क्लिक करूँ तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए. सो पहले फंक्शंस के लिए एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस की बात करते हैं. सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट फंक्शंस? C++ फंक्शंस एक चीज़ होती है जिससे ज़िंदगी आसान हो जाती है. सो यू कैन रीयूज द कोड ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So you can create a functions in JavaScript with the help of function keyword, and then you can define the function's name. Let's say my function's name is get data. Okay. And then you can use small bracket, and then here we have a definition of that particular functions. Okay. अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ console.log, and here we have written like function is calling. Easy. And a function define कर लिया, and then we can call the functions with the help of functions name. So my functions name and then small bracket. तो ये मेरा functions call हो जाएगा. So just reload करा पेज को, तो ये आ गया function is calling. Okay. So मैंने क्या करा, एक function define कर लिया. अब मेरे को next algorithm का step यह है कि like जब मैं button पे click करूँ तो मेरे को ये function call करना है. So इसके लिए logic लिखना पड़ेगा. So first we need to write a logic. Document means I'm accessing this HTML document, and inside I'm accessing button element. How we can access the button element? With the help of get element by id. So button की मैंने id क्या दी है, pt and submit. So here we have a button id, that's it. And then
अब मेरे को क्या करना है, इस पर मेरे को क्लिक करना है. तो क्लिक करने के लिए मेरे को एक्शंस परफॉर्म करनी है. So to perform actions on a JavaScript, we need to add an event listener. So here we have add event listener. So Java में आपने पढ़ा होगा कि we have a listeners, event listener where you can perform the actions. Like you can perform click actions, enter. Like जब आप बटन दबाते हैं enter की, whenever you are searching or control key जितने भी actions होते हैं, double click, single click, ये सारे actions you can perform with the help of add event listener. Okay, so inside this method you need to pass two things. So first one is name of your actions. So what I'm doing, I'm clicking on this particular button. So my actions name is click. Okay, when I click on this particular button, I need to call the functions. My functions name is so get data. So I'll just apply get data here. Okay, so easy. Save and then reload. So when I click on this particular button, function is calling. Here we have a number. Visible? So next step is done. Now, what we have to do, we need to write this logic like document.getElement by id.value. So ये वाली line आपको इस logic के अंदर लिखनी है. And then you can print the data like message data. That's it. So अब मैं check करता हूँ next step. Message data is yep. So here you can define the message data as a blank and then you can access message data. तो क्या गड़बड़ी हो रही है? कुछ पढ़ा होगा C++ में variables. Any idea? Easy करते हैं. Yes, we are printing this message data before defining this particular variables. So इसलिए ये वर्क कर रहा था. So मैंने क्या करा, मैंने लॉजिक लिख लिया कि पहले मैं बटन पे क्लिक करूंगा. क्लिक करने के लिए मैंने लिखा इवेंट लिसनर यूज लिया and my action name is click. When I click on this particular button, I want to call this function's name, and here I have defined the function's name is get data, and here first we have defined the variable name is message data, and then when the user will type on the input box, we can collect the data and then we can store the data and with this thing, and then we'll save and just reload the button. So here I will type hello and then click on the add button. Hello is printing. Visible? Easy? Okay. So second, let's say कि अगर कुछ और टाइप करते हैं, print हो रहा है, LPU टाइप करते हैं, it's printing once again. So my second algorithm का जो steps था वो complete हो गया. First we have created a UI. The second step is for collecting your data from the input field. Now the third step is to store this data in Cloud Firestore, right? So how you can store the data? So first we need to connect this Cloud Firestore data with this entire web applications. So how we can connect this web applications? So first you can go to the project overview of your applications and then click on the app button. And then right now we are working with iOS, Android or web. Which platform? Web. So then click on the web. So first you need to register the web applications. So here I can register the web application name is let's say Vrijraj web app. Okay. And then click on the register page. Okay. So my register page is ready, and then now I'm not using npm node package manager. I'm using normal JavaScript, the script tag. So here we have a code for the script tag, and you just need to copy and then paste because we are Indian. We are good in copy paste. So we just copy and then we'll paste it here. कुछ नहीं करा, copy paste करा because अपन इसमें माहिर है. Okay, so here I have copy pasted the code, and then what you can do, you can remove this entire script tag, and then you can write this script tag inside this script tag. Okay, क्योंकि script tag एक ही रखोगे तो ज़्यादा better रहेगा. Multiple you can use, but मैंने एक में ही डाल दिया. And then again page को reload करा, proper work कर रहा है या नहीं, एक बार check कर लेते हैं. So my functionality is working properly.
ओके, सो अभी तक मैंने क्या करा, मैंने फायरबेस प्रोजेक्ट को मैंने कनेक्ट करा है। ये बेसिकली क्या है, इनकी एपीआईज है जिसके थ्रू ये इन्होंने क्या करा, मेरे को एक कॉन्फ़िगरेशन दी, इस कॉन्फ़िगरेशन से मेरा फायरबेस प्रोजेक्ट मेरा कनेक्ट हो गया। Okay, easy. Now I'm using Cloud Firestore. So for what we have to do, I need to store like import the Cloud Firestore as a service in my web applications. So ये जो पहले मैंने क्या करा, import करा है, इसको मैंने करा copy and मैंने paste कर दिया। ठीक है, so मेरे को Cloud Firestore मेरे को यूज लेना है, तो मेरी सर्विस नेम है या ऐप लिखा है, ऐप की जगह मेरे को आपको यूज लेना है Firestore and that's it। ठीक है, लाइक जैसे आपको कोई भी सर्विसेज यूज लेनी है, यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट एंड देन यू जस्ट नीड टू रिप्लेस द ऐप विद दैट नेम। सो लेट्स से मैं ऑथेंटिकेशन यूज ले रहा हूँ, तो मेरे को ऐप की जगह ऑथ लिखना है। स्टोरेज यूज ले रहे हो तो ऐप की जगह स्टोरेज लिखना है। मैं यूज ले रहा हूँ फायर स्टोर, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द फायर स्टोर। ओके, अब ये खाली है, खाली इसलिए क्योंकि इस ये बेसिकली क्या है, सेट ऑफ फंक्शंस है। एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उस जावास्क्रिप्ट की फाइल में आपके मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन करे हुए हैं, बट उस मल्टीपल फंक्शंस में मेरे को कोई स्पेसिफिक फंक्शन को ही एक्सेस करना है। सो वो फंक्शन कौन सा एक्सेस करना है वो मैं यहाँ डिफाइन करूँगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। अभी जब भी आप है ना लोअर लेवल पे, लेट्स बीटेक में आप पढ़ते हो ना, इट्स अ लोअर लेवल, लेट्स से लोअर लेयर कोडिंग आर्किटेक्चर, वेयर एक ही फंक्शन, एक ही फाइल के अंदर आप सारे फंक्शंस डिफाइन कर देते हो, फाइल को आप इंपोर्ट करते हो और वो पूरी फाइल आपकी इंपोर्ट हो जाती है, और उस फाइल में आप केवल एक फंक्शंस को यूज़ ले रहे हो, बट उस फाइल में 1000 लाइन के कोड लिखे हुए हैं जो अनयूज है। राइट, समझ में आ रहा है? एक फाइल में अपने 50 फंक्शन डिफाइन करे हुए हैं, उस 50 फंक्शंस में केवल एक फंक्शंस को आप यूज़ ले रहे हो, बाकी 49 फंक्शंस के कोड है वो आपकी यूजलेस है। राइट, सो उससे मेमोरी ज़्यादा जा रही है कोड की, इसलिए आता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर कहता है कि लाइक आप फाइल को इंपोर्ट करो, बट फाइल को आप पूरी फाइल को इंपोर्ट ना करके यू कैन इंपोर्ट सम सेट ऑफ मॉड्यूल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फाइल। सो इसलिए लेते हैं कर्ली ब्रेसेस। ओके, सो इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस अब मेरे को है ना जो फंक्शंस मेरे को यूज़ लेने हैं वो फंक्शंस मैं यहाँ यूज़ ले लूँगा। अब वो फंक्शंस है ना वो इसके अंदर बने हुए हैं। अब मेरे पास तो फंक्शंस के नाम याद नहीं है कौन कौन से ले सकते हैं। So what we can do, we can just go to the Cloud Firestore as a documentations. So here we have a documentations. Just click on the cancel button, and then we have a go to docs. So this is a website of the Firebase documentations, and then we are using Firestore as a database. So I'll click on the Firestore database. Okay, and then here we have a button for get started. So I'll click on the get started button, and then there is instructions like say first you need to store this kind of things. So we have already did this thing like initialize app. Here we have already initialized this applications. Now we need to use this functions get firestore. So ये मैंने लगा दिया क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंटेशन से पता चला कि अगर आपको Firestore यूज लेना है, so first you need to import that particular JavaScript file for the Firebase, and then you can import this module get Firestore. It's a predefined functions in that particular JavaScript file. Okay, मैं पूरी फाइल को लोड नहीं करा रहा हूँ, मैं उस फाइल से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ एक फंक्शंस, जिस फंक्शंस का नाम है get Firestore. ओके, उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया है कि लाइक अगर आपको डेटाबेस इनिशियलाइज करना है, सो यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट दिस कमांड. सो हियर आई कैन इनिशियलाइज द एप्लीकेशंस. सो हियर I'll write const database, like you can create a variable with the help of let and const variable. Const as a keyword. With the help of const you can create a constant. I'll paste get firestore and then you can pass this app. ओके, तो ये डेटाबेस में डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है कि लाइक पहले मेरे को फायरबेस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है, देन मेरे को फायरबेस प्रोजेक्ट में क्लाउड फायरस्टोर को कनेक्ट करना है. तो क्लाउड फायरस्टोर को कनेक्ट करने के लिए मैंने यूआरएल को इंपोर्ट करा, उसमें स्पेसिफिकली एक फंक्शंस को मैंने कॉल करा और उस फंक्शन से मैंने एप्लीकेशंस को मैंने इनिशियलाइज कर दिया. ओके, इजी. ओके, now to add a data into the cloud firestore, here we have a lot of functions. Yeah, so like मेरे को क्या करना है cloud firestore में, like here is my database
name is users. So let's say I wanted to create another collections. My collections name is data. Inside data, I wanted to put some document. So मेरे को करना क्या है, एक ऐड क्या करना है, डॉक्यूमेंट ऐड करना है, और क्या क्रिएट करना है, कलेक्शंस क्रिएट करना है, राइट. सो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो यू हैव अ डॉक्यूमेंटेशंस लाइक here you need to import this add method and also you need to import collections method. So मैंने क्या करा, इन दोनों को कॉपी करा और मैंने यहाँ कॉमा सेपरेटेड में पेस्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को पूरी जावास्क्रिप्ट फाइल होती है क्लाउड फाइल स्टोर की एक्सेस नहीं करनी है, मेरे को उस फाइल में सम सेट ऑफ फंक्शंस को एक्सेस करना है. सो गेट फाइल स्टोर इज फॉर द इनिशियलाइजिंग योर डेटाबेस. Add documents means to add data inside the collections, and collection is for creating a collections. Okay, so here we have a concept. Now like we can write the logic for adding a data into the database part. So first we can do where we can create a try catch block. So try catch block के बारे में कभी पढ़ा है, क्या होता है? Yes. So it's a exceptional handling. Like पहले एक बार चेक करते हैं, कमांड को रन करते हैं, अगर कमांड सक्सेसफुली चल जाती है तो वो लॉजिक लिखेंगे आप ट्राई के अंदर. अगर कमांड आपकी सक्सेसफुली नहीं चलती है तो उसको लॉजिक को आप लिखोगे कैच ब्लॉक में, जहाँ वो एरर थ्रो करेगी उस एरर को आप प्रिंट करा सकते हो. ओके, सो यहाँ पूरा लॉजिक लिखा हुआ है कि लाइक ये आपको ऐड डॉक वाला एक फंक्शंस कॉल करना है. सो लेट्स से आई एम कॉलिंग द फंक्शंस नेम इज ऐड डॉक एंड इनसाइड like here we have a collections. So my collections name is this. जो by default collections जो अपन ने import करा है ये collections है, ये आपको दिख जाएगा यहाँ, ये वाला आपका collections. ठीक है, again this is a method. Here we have a method. This is a method name is collections. इस collection में अपन को कौन से database को connect करना है, तो मैंने database, ये है मेरा database जो मैंने यहाँ ये define करा है. ओके, इस database में मेरे को कौन सा collections create करना है, my collections name is data. ओके, इस कलेक्शंस में मेरे को क्या ऐड करना है, डेटा ऐड करना है. तो वो डेटा होता है ना, अपन जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा ऐड करते हैं. क्लाउड फायर स्टोर में डेटा ऐड करना है तो अपन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे. सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एनी आइडिया? इट्स अ काइंड ऑफ जेसन बट इट्स नॉट अ जेसन. सो फर्स्ट आई टॉक अबाउट द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. सो यू कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. लेट्स से आई कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट नेम इज माय object, and you can create an object with the help of curly braces, and inside curly braces you can have a key value pair. So let's say my key as a name and then value is Vrijraj. Okay, so this is my object, and then you can print this object with the help of console.log, and then you can put obj. Okay, इसको मैं फंक्शंस के बाहर ला रहा हूँ ताकि ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा. सेव करा और यहाँ जाएंगे तो रीलोड करेंगे तो ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, बट ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है. इस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं कि लाइक एक पर्सन का नेम एंड एज आ सकती है. सो हियर वी हैव अनदर की वैल्यू पेयर, लेट्स से एज, एंड द एज इज 23. ओके, सो अगेन रीलोड द पेज. हियर वी हैव अ ऑब्जेक्ट, हियर वी हैव अ की वैल्यू पेयर नेम इज एज एंड नेम. सो लेट्स से आई वांट टू एक्सेस द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो एक्सेस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट की नेम. सो माई की नेम इज नेम. सो मेरे को नेम एक्सेस करना है तो obj डॉट नेम से मैं लिखूंगा तो मुझे नेम एक्सेस हो जाएगा. नेम इज वृजराज. अगर मेरे को एज एक्सेस करनी है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, obj डॉट एज. सेव एंड देन रीलोड दिस पेज. इजी. दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ इन द जावास्क्रिप्ट. सो ऑब्जेक्ट से क्या चीज़ें ईजी हो जाती है बिकॉज इट्स अ रीयूजेबल कोड. जैसे फंक्शंस होते हैं इससे ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, बट ऑब्जेक्ट इज दिस इज नॉट है ऑब्जेक्ट जो आप अज्यूम कर रहे हो C++ में होता है उप्स वाला कॉन्सेप्ट. या यू कैन कंसिडर दिस वे, बट या ये कुछ और भी है ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट इन दिस वे. सो लाइक मैंने डेटा रिसीव करा, मैसेज डेटा. सो मैसेज डेटा का मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. तो मैंने लिखा लेट डेटा टू ऐड, और ये ऐड करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने की डाली मैसेज. ठीक है, या मैंने पूरा डाल दिया मैसेज. ठीक है, मैसेज के अंदर वो वैल्यू पास करनी है तो वैल्यू क्या है, मैसेज डेटा. इजी, कोई इशू? सेव. और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया. इस ऑब्जेक्ट को मैं पास कर दूंगा इधर. ठीक है,
और ये है ना, ये पूरा का पूरा फंक्शंस होता है ना, मेरे को एक रिटर्न करेगा, उस रिटर्न कर रहा है तो मेरे को वैल्यू रिसीव करनी पड़ेगी। सो यू कैन रिसीव द वैल्यू एज अ डॉग इज इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा चीज, जावास्क्रिप्ट होती है ना, वो एसिंक्रोनस लैंग्वेज है। एनी आइडिया अबाउट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? JavaScript is an asynchronous programming language. Any idea? वो तो है, बट होता क्या है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस लैंग्वेज? लाइक C++ इज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस लैंग्वेज, पढ़ा भी नहीं होगा। होता क्या है सिंक्रोनस? पाइथन इज कंपाइल, वो होता है ना जस्ट कंपाइल टाइम और रन टाइम लैंग्वेज। तो क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है? इंटरप्रेटर। सो इंटरप्रेटर में होता क्या है एग्जैक्ट? ठीक है, और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या होगा प्रोग्रामिंग में? राइट राइट। तो जावास्क्रिप्ट है ना एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो है ना किसी चीज़ का रुकेगी नहीं। लाइक अपन ने क्या करा, नेटवर्क कॉल कर दिया। लाइक से कि आपने क्या करा, फेसबुक पे एक पोस्ट का कंटेंट ऐड करा, और कंटेंट ऐड करने के बाद क्लिक करा पोस्ट बटन पे, तो आपका लोडर आ जाता है उस बटन पे। अब उसका इंटरनेट आपका स्लो होगा ना, तो वो रिक्वेस्ट होती है आपकी फेसबुक के सर्वर पे लेट जाएगी, ठीक है। और इंटरनेट स्लो है, बट जावास्क्रिप्ट क्या है, वो कहेगी मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं तो अगली लाइन पे जाऊंगा, ठीक है। तो उसको है ना अपन को थोड़ा सा ना स्ट्रिक्टली बोल के करना पड़ेगा कि जब तक तू ये लाइन पूरी कंप्लीट नहीं करता तेरे को रुकना पड़ेगा, भाई ने बोला है तो मुन्ना भाई का बोलते हैं भाई ने बोला है तो करना होगा। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट है ना एसिंक्रोनस है, मीन्स ये वेट नहीं करेगी नेक्स्ट लाइन का। तो अपन को है ना उसको वेट करने के लिए अपन को थ्रेड को ब्लॉक करना पड़ेगा, कि मैंने करना पड़ेगा कि जब तक ये लाइन आपकी कंप्लीट नहीं होती है, एग्जीक्यूट नहीं होती है, तब तक नेक्स्ट लाइन में आपको जाना नहीं है। तो इसके लिए लेते हैं एसिंक अवेट। एसिंक अवेट होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको एसिंक लगाना पड़ता है फंक्शन के आगे, और अवेट आपको लगाना पड़ता है यहाँ। कि लाइक ये जो है ना नेटवर्क कॉल है, नेटवर्क कॉल मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग टू द नेटवर्क टू ऐड ए डेटा इनटू द डेटाबेस पार्ट, और वो देयर माइट बी प्रोसेस कि आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है, और जावास्क्रिप्ट रुकेगी नहीं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए मैंने क्या करा है, अवेट लगा दिया कि जब तक ये लाइन पूरी प्रोसेस सक्सेसफुली नहीं होती है तब तक आगे वाली लाइन में जाना ही नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगला है कि लाइक मैं ना ये बेसिकली क्या है, वही डॉक्यूमेंट है। लाइक आई एम क्रिएटिंग अ कलेक्शंस नेम इज डेटा। इस कलेक्शंस में मैं एक डॉक्यूमेंट स्टोर करा रहा हूँ, उस डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा है, वो ये डेटा है, की वैल्यू पे है, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट मेरे को रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली रिटर्न करने के लिए मैंने क्या करा, ये फंक्शंस है ना बेसिकली मेरे को रिटर्न कर रहा है, उस रिटर्न करने के लिए उसको मैंने वैल्यू स्टोर करा दी डॉक, और इसको मैंने यहाँ लॉक करा दिया डॉक। नहीं, अगर कोई एरर आती है तो आई कैन लाइक प्रिंट द एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, इजी, दिक्कत कुछ नहीं करा, ट्राई कैच लगा दिया, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस यूज लिए हैं, एंड दैट्स इट। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट रीलोड द पेज एंड हियर आई टाइप हेलो, ठीक है। क्लिक ऑन द ऐड बटन, ठीक है, चेक कर लेते हैं, पेज रीलोड करते हैं, डेटा ऐड हुआ है नहीं हुआ। So here I can check the line by line executions. पहले चेक करते हैं फंक्शंस आपका कॉल हो रहा है नहीं. So you can check the functions with the help of console.log. Here you can write calling. Okay. Just reload the page and click on the HD. Function is calling. So once the function is calling, then you can receive the data as a message, and then you can create a object. So here you can write the console.log, and then you can write data to add. Okay. So reload the page, something, data, and then here we have a response. So ये response आ गया है, उस response को आप check करोगे database में.
So there will be a collections name is data. तो डेटा नाम का आपका ऑटोमेटिकली कलेक्शंस क्रिएट हो गया. इनसाइड देयर विल बी अ यूनिक बाय डिफॉल्ट आईडी ऑटो जनरेटेड बाय द डेटाबेस एंड देन हियर वी हैव अ की वैल्यू पेयर इज समथिंग. ठीक है. सो अभी मैं पूरा का पूरा ये डेटा डिलीट कर देता हूँ. कलेक्शंस, आई एम डिलीटिंग दिस एंटायर कलेक्शंस. यूजर्स भी मैं डिलीट कर देता हूँ. So click करो users, delete collections. My collections name is users, and then I'll just reload the page, and then what I can do here, we can write the message. Let's say great. ठीक है. जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ रिस्पॉन्स आ गया कि कुछ एक रिस्पॉन्स आ रहा है. अभी मान लेते हैं कि अपने पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है. रिस्पॉन्स में गए और जस्ट रीलोड करा क्लाउड फायर स्टोर को. सो देर विल बी अ डॉक्यूमेंट नेम इज डेटा एंड इनसाइड देर विल बी अ डॉक्यूमेंट and inside the document name is great. Okay. So अब यहाँ ना कलेक्शंस में कुछ भी पास कर सकते हो कि लाइक जैसे टाइम स्टैम्प होता है कि लाइक डेटाबेस में जब भी डेटा ऐड करते हैं वी जस्ट नीड टू स्टोर की वैल्यू पेयर एज अ टाइम स्टैम्प एट व्हाट टाइम वी आर जनरेटिंग अ डेटा. लाइक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो ना यूपीआई के गलती से तो आपका आता है ट्रांजेक्शन्स आईडी एंड द ट्रांजेक्शन्स डेट एंड टाइम, किस टाइम पे करा. तो मैंने चाहता हूँ कि लाइक कोई यूज़र मेरे को फीडबैक दे रहा है तो मेरे को पता चलना चाहिए किस टाइम पे वो फीडबैक दे रहा है. So here we can store the timestamp, like you can write timestamp, and then you can write new date, and that's it. New date एक function है JavaScript का जिससे by default आपको timestamp आ जाएगा और timestamp आपका store हो जाएगा. Okay. So I'll just reload the page, and then here we'll write hello from Vrijraj. ठीक है. Add data, and then here we have a response. I can go to the database, and then there will be another document, and inside document we have a message as well as the timestamp. So timestamp में आ गया कि मेरे को जून 18 को इस पर्टिकुलर टाइम पे किसी यूज़र ने ये मैसेज मेरे को दिया है. ओके. सो ये मेरी होते हैं ना एक एप्लीकेशन बन गई. इट्स ऑल अबाउट शेयर योर थॉट्स. सो ये एप्लीकेशन है. इस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो या ब्यूटीफाई कर सकते हो. सो अभी ब्यूटीफाई करने के लिए पहले होता है एक सक्सेस मैसेज थ्रो करना. जब भी आप फेसबुक पे एक पोस्ट करते हो तो पोस्ट करने के बाद नीचे एक स्नैक बार आता है कि लाइक योर पोस्ट इज सक्सेसफुली पोस्टेड, कहीं भी लिखा हुआ होता है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन शेयर द अलर्ट मैसेज. सो हियर यू कैन शेयर द अलर्ट मैसेज. So with the help of alert box like alert, and you can add the data like data added in database. Okay. जैसे पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपका डेटा ऐड हो गया है डेटाबेस में. So reload the page, and I'll hit the data hello Lamba, and then click on the add, and then there is a notification data is added in the database part. I'll click on the OK, and then I'll go to the database, and here we have a hello from this one. ठीक है. So ये आपकी शेयर थॉट्स आपकी एक एप्लीकेशंस बन गई है. सो बेसिकली अब मैं क्या करता हूँ इसको ब्यूटीफाई करता हूँ. ब्यूटीफाई करने के लिए बेसिकली वी कैन यूज एनी CSS लाइब्रेरी. CSS पढ़ाओ. If you are not aware about the CSS, or if you have less experience in the CSS, you can use the concept of bootstrap where we have to copy paste. ठीक है. So bootstrap में जाते हैं. So bootstrap की वेबसाइट में जाते हैं. Here we have a get bootstrap is a website. Bootstrap की आप वेबसाइट पे जाओगे तो here we have a documentations like first we need to include CSS and the JavaScript code of the bootstrap. So I'll just copy the CSS code, and you can apply the CSS code in the head section. So here we have a head section, okay, in Bootstrap, and you can post the JavaScript code in the body section of your HTML code. So ये मेरी body section है और ये script है यहाँ close रहा है तो मैंने ये JavaScript का code पेस्ट कर दिया Bootstrap का. ओके. ठीक है. सो अब मैंने पेज को रिलोड करा तो थोड़ा सा पेज अजीब सा दिखने लग जाएगा क्योंकि अब मैंने बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दिया है. अब बूटस्ट्रैप अप्लाई करा है तो बूटस्ट्रैप का मैं कॉन्सेप्ट यूज ले सकता हूँ. लाइक बूटस्ट्रैप में वी कैन हैव अ मल्टीपल कंपोनेंट्स. सो यू कैन गो टू द एग्जांपल पार्ट और यू कैन गो टू द डॉक्यूमेंट्स, एंड देन हियर वी हैव components. So these all are the components. So let's say I wanted to create a button कि लाइक मैं एक बाय डिफॉल्ट डिज़ाइन वाला बटन में यूज़ लेना चाहता हूँ. तो मेरे को क्या करना है, वी आर इंडियन, वी जस्ट नीड टू कॉपी Ctrl+C and then Ctrl+V. So click on this particular blue button, and then मेरा बटन कौन सा था, here we have a button, and मैं रिप्लेस कर दूंगा कंटेंट
प्राइमरी से यहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया, आईडी मैंने यहाँ पास कर दी इसके अंदर, एंड देन सेव. ओके, रीलोड द पेज, एंड देन अब मेरा बटन आ गया ऐसा, इजी. अब दूसरा, अब मेरे को इनपुट फील्ड चाहिए थोड़े डिजाइन्स वाले. सो हियर वी हैव अ फॉर्म सेक्शन एंड देन यू कैन गो टू द कंट्रोल, एंड देन हियर वी हैव अ टेक्स्ट बॉक्स. दिख रहा है, टेक्स्ट एरिया. So you can check this code, text area. This is a code for the text area. You just need to copy this code and then you can paste it here. Okay, so you can pass this ID. My ID is this one. Just replace this one, save, and then page reload, and then the UI is ready. Okay, थोड़ा थोड़ा UI ready होना चालू हो गया. So I can add some BR tag क्योंकि जो थोड़ा सा space लगाते थे. So here I will add BR tag, reload, and then page reload. So there is a BR tag. Okay. So I can pass the placeholder. It's a by default property like to share as accessibilities, like share your thoughts. Okay. So here we have a message, share your thoughts, and then you can type and then click on the add data. Okay. ऊपर वाला unnecessary, I can remove this unnecessary part. So I can remove this unnecessary part as a table. Right? So Vrijraj की जगह मैं क्या लिखूंगा? Share your thoughts. I can remove this style color as a red. Save and then reload. Application is ready. डिज़ाइन थोड़ा सा हो गया है. डिज़ाइन को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने के लिए इन द बूटस्ट्रैप वी हैव अ कंटेनर्स, द ग्रिड सिस्टम. ये थोड़ा सा टफ है, बट या like Bootstrap is providing a great system where you can make responsive website. Like you can create a container. So here we can create a div section, and inside container, like for creating a container, you need to create a class, and then you can provide containers. ठीक है. So ये कंटेनर होता है, आपको क्लोज करना है, रैप करना है बेसिकली ये यहाँ. ओके, फॉर्मेट, सेव, एंड देन रीलोड, कंटेनर आ गया. ओके, सो मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट होता है पूरा सेंटर में आना चाहिए. बूटस्ट्रैप होता है हर चीज़ बनी बनाई देता है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंटेशंस एंड देन यू कैन ईजिली. सो कंटेनर के अंदर मैं को चाहता हूँ कि ये जो सारा कंटेंट है ये सेंटर अलाइन होना चाहिए. बटन एकदम सेंटर में हो, टेक्स्ट एकदम सेंटर में हो. So I just need to use text hyphen center. This is the predefined class of the Bootstrap. Copy and then reload, center में आ गया. Easy. की टैग लगाया, कुछ अपन लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लॉरेप्लिप्सम की. लाइक बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि कुछ कंटेंट आ जाए. सो हियर वी हैव अ लॉरेप्लिप्सम. सेव एंड देन रीलोड. ओके, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मार्जिन आ जाए ऊपर से. तो मार्जिन की भी बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइंड क्लास है. This is called as M for margin, T for top, and then here we can pass the value. So let's say I'm passing the value is 5. So ऊपर से margin आ जाएगा. Bootstrap पे बनी बनी classes है. You just need to copy the place the classes, and then you can reuse, and you can easily design the UI. So here we have a add data as a button. What we can do here, we can replace the content, add data to share thoughts. Okay, save and then reload. Application is ready. Now we can deploy this application on Firebase. So for storing that particular, so hosting that application on Firebase, what we have to do, you need to run this command, Firebase deploy, and that's it. So मेरी application deploy हो गई. I can check this URL. I'll click on this particular URL and just reload the page. Application is ready. So you can open this applications. I'm sharing this on this chat, and I'm just waiting for your feedback. So you can add your feedback. So what I'm doing, I'm removing this collections. Name is data, and yeah. So now you can open this application. You can provide your thoughts. You can provide your feedback so that we can test it.
Yeah, someone has added some comment. Lovely. Okay, next. Hola. So it's easy. Like Firebase से आप कुछ भी create कर सकते हो. It's all about the code accessibilities and the documentations, how you can read the document and then how you can add the data in the database part. Okay. बहुत सारी आ गई. कैसा लगा? So with the help of Firebase, like you can easily create this kind of web applications and you can share with your friend. You can collect the anonymous feedback and then you can mention this small project in your resume that you have created a simple web applications for anonymous feedback sharing. Okay, easy. Hard है? नहीं. इसमें मैं और भी लॉजिक लगा सकता हूँ कि like only authenticated person can give the feedback. Understand? Like you can provide login functionality. First, user need to log in with their Google account, Twitter account, and then authenticated user can add the feedback. तो वो भी आप कर सकते हो. You can just need to apply authentication as a property. Okay? Easy था. So now, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ. The next one part is, let's say I'm adding this data. मैंने लॉजिक लिख लिया कि डेटा ऐड करने का और डेटा ऐड भी हो गया. अब मैं चाहता हूँ कि डेटा को रीड करना है. सारे डेटा मेरे को देखना भी तो पड़ेगा वेब इंटरफेस में. सो डेटा को रीड करना है तो मैं अगेन डॉक्यूमेंटेशन में जा सकता हूँ. हियर वी हैव अ डॉक्यूमेंटेशंस एंड हियर वी हैव अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर रीड डेटा. So for read data, so here we have a get docs. This is a method. So I'm just copy and then paste this here. Collection's name is get docs. Okay. So what I'll do here, I will create another functions. So I'm creating a functions. My function's name is get or read data. Okay. अब डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं. डॉक्यूमेंटेशन में कहता है कि लाइक आपको ये फंक्शंस यूज लेना है. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट कॉपी पेस्ट and I will replace it here. Okay. So my collection's name is data. ये मेरा डेटा डाल दिया. मैंने क्या करा, इस कलेक्शंस में ना रीड करा और रीड करने के बाद ये मेरे क्या है, बेसिकली ये डॉक्स है. सारे डॉक्स आ गए. उस डॉक पे मैंने क्या करा, लूप चलाया और लूप चलाने के बाद एक एक करके मैंने डॉक उस डेटा को मैंने प्रिंट करा दिया एंड दैट्स इट. अब मैंने क्या करना है, ये फंक्शंस कॉल करना है. तो ये मैंने फंक्शंस एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टली मैंने कॉल कर दिया. ओके. सो अब मैं पेज पे जाऊंगा, रीलोड पे क्लिक करूंगा. देयर इज अ सिंटैक्स एरर. या सो हियर वी नीड टू यूज async मेथड फॉर द नेटवर्क रिक्वेस्ट. या सो हियर वी हैव अ डेटा. सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए. एक डॉक्यूमेंट की आईडी आ गई, दूसरे डॉक्यूमेंट की आईडी आएगी, बट उसके अंदर का डेटा इस तरीके से नहीं आ रहा है. तो वो डॉक्यूमेंट का डेटा आपको चाहिए थोड़ा अच्छे तरीके से. सो व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन राइट doc.data itself, like replace and doc.data. Reload the page and सारे डेटा आ गए. दिख रहा है? वाह वाह वाह. ओके. ठीक है. सो नाउ ये मेरे पास सारा डेटा आ गया. इस डेटा को आप प्रिंट भी करा सकते हो इन द टेबल फॉर्मेट. So what you can do, like you can store this data in a variable. So what you can do here, you can create a variable. So let's say I'm defining a variable name is all data. And वो data होगा वो basically आपका क्या होगा, array होगा. उस array में ये आप data store कराओगे. So array is equal to doc.data. Easy. No problem. ठीक है. So अभी डेटा आ गया है. इस डेटा को मेरे को बेसिकली मेरे को टेबल में प्रिंट कराना है. सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ टेबल. सो जिस फॉर्मेट में मेरे को टेबल में प्रिंट कराना है. सो आई कैन क्रिएट अ टेबल. सो हियर वी हैव अ टेबल टैग एंड इनसाइड टेबल टैग वी कैन क्रिएट अ रो. दिस फर्स्ट रो इज फॉर द हेडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल. सो फर्स्ट इज फॉर मैसेज. सो हियर वी हैव अ MESSAGE message. Sorry, the column. First we need to create a column. So here we have a column message. And then second one is for the timestamp, right? उसके बाद अपनी रोज होगी और वो रोज होगी अपनी डायनेमिक, राइट? द रोज विल बी जनरेटेड बाय द डेटा इटसेल्फ. जो डेटा आएगा उस डेटा के बेसिस पे, या लाइक
अगर अपने पास 15 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो 15 रोज जनरेट होगी, 10 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो 10 रोज जनरेट होगी। तो अभी अपन क्या करते हैं, स्टैटिक डेटा डाल देते हैं ESD एंड समथिंग ESD। मैं चेक कर लेता हूँ कि लाइक इतना अपना वर्क कर रहा है या टेबल इज वर्किंग, एंड देन यू कैन अप्लाई द क्लास फॉर द बूटस्ट्रैप। लाइक एक टेबल नाम की क्लास होती है जो आपको जीवन आसान कर देती है। So here we have a table. Okay, so as of now in this table the data is static. So what we have to do, we have to run a loop on this particular rows, right? So इस row पे मेरे को logic चलाना है, तो what we can do, so in table basically we have a table head. टेबल हेड के अंदर ही बेसिकली आपकी ये टेबल रोज होती है, क्योंकि हेडिंग में आप हेडिंग डालते हो, एंड देन इन द बॉडी सेक्शंस टी बॉडी एंड इनसाइड टी बॉडी यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल रोज। अगेन वही सेम का सेम है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। तो बेसिकली क्या करना है, टी बॉडी के अंदर क्या करना है, मेरे को मल्टीपल रोज क्रिएट करने हैं। सो हियर वी कैन डिफाइन द आईडी, सो हियर वी कैन डिफाइन द आईडी इज टेबल डेटा। ओके, अब मेरे को क्या करना है, ये आईडी पे मेरे को लूप चलाना है। सो बेसिकली क्या करना है, लूप चलाने के लिए मेरे को क्या करना है, लूप चलाना है तो मेरे को लूप चलाने के लिए आता है फॉर लूप, सुना होगा। सो फॉर लूप में फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द इनिशियल स्टेट। सो हियर INT तो लिख नहीं सकते, देन वी डिफाइन आई, लेट आई इज इक्वल टू 0। कहाँ तक चलना है, एरे की लेंथ तक। तो एरे की लेंथ कहाँ हो सकती है, आई लेस देन एरे मीन्स माई एरे नेम इज ऑल डेटा। सो ऑल डेटा डॉट लेंथ से मेरे को लेंथ आ जाएगी, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट कंडीशन होती है आई प्लस प्लस, कुछ ऐसा पड़ा होगा फॉर लूप में। फॉर लूप चला दिया, अब फॉर लूप में मेरे को क्या करना है, अब ये मेरे को डायनेमिक रोज जनरेट करनी है। तो फॉर जनरेटिंग अ डायनेमिक रोज वी नीड टू यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आईडी है मेरी क्या है, जो टेबल बॉडी में डिफाइन करी हुई आईडी, table data. So this is ID. Here I will define this ID. ठीक है, इस DOM एलिमेंट के अंदर मेरे को HTML इंसर्ट करना है। So here we need to use insert HTML. ठीक है, to insert the HTML we need to use insert inner HTML equal to, अब मेरे को मल्टीपल लाइन के लॉजिक लिखने हैं, तो ये होता है टेम्पलेट लिटरल्स, कि आपको स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो ये आपको सिंबल यूज करना पड़ता है स्पेसिफिक फॉर क्रिएटिंग अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। So here we can write, we can cut this logic जो अपन ने static लिखा हुआ है, और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, save and then reload the page। ठीक है, अभी डेटा नहीं आएगा एक्चुअली, मैं चेक कर लेते हैं यहाँ कंसोल लॉग में कि ऑल डेटा की वैल्यू क्या आ रही है। सेव एंड देन रीलोड। क्या, सो अभी एक मैसेज आ रहा है ग्रेट जॉब का, और उस ग्रेट जॉब पे ना बार बार वो डेटा अप्लाई हो रहा है। तो हियर आई जस्ट नीड टू अपेंड द डेटा। सो कभी सुना होगा A प्लस इज इक्वल टू A, प्रीवियस A की वैल्यू को आने वाली A की वैल्यू से अपडेट करना। और बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। कभी जावास्क्रिप्ट पढ़ी रही है क्या? ओके, नो इशू। सो बेसिकली क्या करना है, इनिशियली मेरे को क्या करना है, जब भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये डेटा को इसको क्या करना है, खाली स्ट्रिंग करनी है, और मैंने इंसर्ट HTML करा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इन HTML में डाल के ये डाल दिया। ठीक है, ओके, हियर वी हैव अ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। सो व्हाट यू कैन डू, ये जो लूप चला रहे हो, इस लूप का आप इधर भी चला सकते हो, और ऑलरेडी अपना ये फॉर ईच लूप चल ही रहा है। जो ये फॉर ईच लूप आपका दिख रहा है, ये लूप आप यहाँ भी चला सकते हो। ठीक है, तो डॉक डॉट डेटा होता है, वो आपको इंडिविजुअल डेटा दे रहा है एक एक करके। उस डेटा के अंदर अपना नेम है और एक है आपका एज है। तो नेम मेरे को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस, जिससे आपको वेरिएबल प्रिंट कराना है, जिससे मेरे वो ऑब्जेक्ट आ गया।
ऑब्जेक्ट का मेरे को क्या करना चाहिए, मैसेज Sorry, चाहिए, I can't do that. मैसेज प्रिंट कर दिया. अगर मेरे को टाइम स्टैम्प चाहिए तो हियर आई विल राइट doc.data.timestamp, save, and then reload the page. Sorry, this page. So here we have a data. Okay, so ये so what you can do, you can create a separate page for the admin section, and then you can see the feedback, and you can see it, share the specific URL to the friends, and then you can collect the feedback, and then you can get the data. Okay, easy था, कोई प्रॉब्लम? ठीक है. सो अब एक और भी इसके फंक्शनलिटीज है, लाइक as of now I talk about the adding the data into the cloud firestore to read the data and the specific collections, or if you want to delete the data, there is a method name is delete method. So you just need to go to the documentations, like manage the data, like delete data, there is a documentations, and then we need to invoke this method. सो ये आपको बस कॉल करना है फंक्शंस बना के, और आप इजीली ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब परफॉर्म कर सकते हो. ओके, इजी है. फायरबेस टफ है, कॉलेज का टाइम है, प्रोजेक्ट्स बनाना चालू करो. फायरबेस पे बहुत इजीली प्रोजेक्ट बन जाएंगे, रिज्यूमे तुम्हारा बहुत हैवी बन जाएगा. एंड वंस यू अप्लाइड द फायरबेस एंड द स्किल्स एंड द वेब, जो आपने रिज्यूमे लिखा है, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे आपका बिल्ड हो जाएगा. So यही मेरा था सेशंस कि like how we can create a web applications with the help of Firebase. You can use any services. You just need to go to the documentations, and then first you need to understand the documentation, and then you can write the code according to documentation, and then you can work on it. Any other questions? And also you can deploy the latest version of your website. You just need to run the command Firebase deploy, and that's it. ठीक है, कोई confusion, doubt? ओके, सो किसी ने डेफेस्ट में रजिस्टर करा था? डेफेस्ट इंडिया 2021, IWD इंडिया. ओके, सो बेसिकली वो वेबसाइट पूरी हमारे फायरबेस पे बनी हुई थी. वी आर कलेक्टिंग द यूजर डेटा इनटू द फायरबेस, एंड देन वी आर सेंडिंग अ कंफर्मेशन मेल. वो सारा हम फायरबेस पे कर रहे थे, पूरा का पूरा 1 लाख यूजर्स को मैनेज करना. तो वो जितने भी लार्ज स्केल एप्लीकेशंस की बात आती है ना, तो वहाँ क्लाउड आ जाता है, और क्लाउड में आपका फायरबेस ही आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत ईजी कर देता है. यही था. So that's all from my end. So if you have any questions, you can ask your questions. Yeah, I'm open for the questions. Any questions? ठीक है. Yeah, that's all. Thank you.